Hi, welcome. So now let's continue our utility functions. The next one we are doing is Cobb Douglas. तो अगर आपने ध्यान से देखा अपना इंडेक्स तो इसको वीडियो को मैंने मेंशन किया है Cobb Douglas and convex. Now you should ask me or you would wonder कि दोनों सेम ही तो चीज होती हैं, एक ही चीज है ना दोनों? नहीं, they're both not the same thing. Convex कोई भी फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास MRS डिमिनिशिंग है. If I have a diminishing MRS, it is convex. But Cobb Douglas are those functions which have the general form of a x1 c x2 d, wherein c and d and a all are positive integers or numbers. So अगर मेरे पास बहुत सारे convex ICs है ना, तो उसमें से कुछ convex ICs जो है वो Cobb Douglas है. So for example अगर मैं लूँ u is equal to 1 upon root x plus 1 upon root y, इसको अगर आप कैलकुलेट करो इसका भी डिमिनिशिंग MRS निकलेगा. तो ये भी एक कॉन्वेक्स IC है, लेकिन क्या ये कॉन्वेक्स IC Cobb Douglas है? Absolutely not. So all the convex ICs are not Cobb Douglas, but all the Cobb Douglas functions are convex ICs. तो अगर मैं अपने convex ICs का पूरा सेट बना रही हूँ तो उसमें से कुछ convex ICs are Cobb Douglas, but yes, all Cobb Douglases are always convex. Are always convex. तो convex ICs कौन कौन से होते हैं apart from Cobb Douglas, वो हम बाद में बात करेंगे. पहले हम Cobb Douglas को अच्छे से स्टडी करते हैं. Cobb Douglas जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. सारे फंक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, इनफैक्ट हम जितने भी यूटिलिटी फंक्शंस में स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअली, बट Cobb Douglas इज रियली सिंपल. प्रॉब्लम क्या है कि जब जो हमने अभी तक स्टडी करा है अपने 12th स्टैंडर्ड की माइक्रो में या फर्स्ट ईयर की माइक्रो में, हमने हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स आईसीज देखे हैं. तो हमारा ना माइंडसेट बन जाता है कि आईसी अगर बनाना है तो कॉन्वेक्स होगा. ट्रू नहीं है. Cobb Douglas कॉन्वेक्स होगा, लेकिन Cobb Douglas के अलावा बाकी आईसीज कॉन्वेक्स होंगे, ये ट्रू नहीं होता. आपने भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट देखा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा, आपको पता है ना सारे आईसीज कॉन्वेक्स नहीं होते हैं. सो प्लीज ट्राई एंड सेपरेट योर माइंड फ्रॉम Cobb Douglas to convex. Don't think all convex ICs are Cobb Douglas, please. That will land you into trouble. Cobb Douglas का general form क्या होता है? A x1c x2 d, wherein A, C and D are all greater than equal to 0. Sorry, not equal to, greater than 0. Positive होने चाहिए, 0 या negative नहीं हो सकते हैं. Fair enough? Now let's see. इसका MRS क्या है and stuff like that. So let's firstly find out the MU1. MU1 is del U by del x1, which is nothing but A into C x1 raised to power C minus 1 x2d. MU2 is del U by del x2, which is A into D x1 raised to power C x2 raised to power D minus 1. ठीक है, ये आया मेरा MU1, ये आया MU2. हमें पता है MRS is when we divide MU1 by MU2. So let's divide it and call it equal to MRS. A gets cancelled. x2d minus 1 x2d, which means that this term gets cancelled and this term becomes 1. This term gets cancelled and this term becomes 1. So this entire thing becomes C by D into x2 by x1. So my MRS is equal to C by D into x2 by x1. ये एक कांस्टेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता. तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो MRS है वो डिमिनिशिंग है? एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल कॉन्वेक्स आईसीज आल्सो लेटर ऑन, हाँ, जो मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ. हम हमेशा जो कंपेयर करते हैं ना, वी ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट. वी ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट. सो एज आई एम गोइंग डाउन ऑन द आईसी, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ MRS फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. मैं कैलकुलेट कर रही हूँ MRS फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. कैसे चेंज होगा? जब हम पॉइंट A से पॉइंट B पे जाएंगे तो x1 इज राइजिंग, x2 इज फॉलिंग, बट क्योंकि न्यूमरेटर फॉल कर रहा है और डिनोमिनेटर राइज कर रहा है तो ओवरऑल ये जो टर्म है वो फॉल कर रही है. इसका मतलब हमारे पास जो MRS है वो डिमिनिशिंग है. अगर हमारे पास डिमिनिशिंग MRS है तो हमारा IC जो है वो कॉन्वेक्स बनेगा ही बनेगा. हमारा आईसी जो है वो कॉन्वेक्स बनेगा ही बनेगा. मैंने इसके अंदर एक चीज़ मिस करी है कि ये हमारे पास जो आईसी है उसमें ट्रेड ऑफ है, क्योंकि दोनों गुड्स हैं.
वो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड है, क्योंकि वो चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. यू नो दैट लाइक वी सेड ना, अगर हम x1 इंक्रीज करते हैं तो यूटिलिटी इंक्रीज होती है. सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहने के लिए हमारे को यूटिलिटी कांस्टेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए दूसरे गुड से यूटिलिटी कम करनी पड़ेगी. इसका मतलब हमें अगर x2 गुड है तो x2 को भी फॉल कराना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज अ नेगेटिव स्लोप. सो ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोग को आता है. बट नेगेटिव स्लोप में हमारा आईसी कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स आईसी. कॉन्वेक्स आईसी क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास है डिमिनिशिंग एमआरएस. हमारे पास डिमिनिशिंग एमआरएस क्यों है? क्योंकि जब हम ए से बी पे जाएंगे एमआरएस कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारा x1 राइज करेगा, x2 फॉल करेगा. अगर x1 राइज करे और x2 फॉल करे तो ओवरऑल ये टर्म फॉल कर रही है, विच इज व्हाई वी से वी हैव अ डिमिनिशिंग एमआरएस. Okay, we have a diminishing MRS, right? So we understand Cobb Douglas. Let's now talk about the different traits of Cobb Douglas. I'm going to take a hypothetical example. Let's say x1 raised to power 2 and x2. This is my function. My Cobb Douglas function is x1 square x2. Now, let's plot the IC for this one. Let's suppose I take a bundle like 0, 10. And when I do that, so utility becomes 0 square into 10. Multiply है ना बीच में, तो 0 हो जाएगा ना. This gives me a utility of 0. Try and take a bundle of 2, 0. It will still give you a utility of 0. So अगर आपका x1 या x2 0 है तो आपकी यूटिलिटी जो है वो भी 0 है. Which means that when x1 is 0, I'm on the y-axis. When x2 is 0, I'm on the x-axis. Which means कि ये जो axes है ना दोनों, these axes ना that you see, this is also one IC. This is the first IC. These axes is one IC. This is the first IC. Which is why any other IC that we draw for any Cobb Douglas function will never touch the axis, because the axis itself is one IC. अगर मैंने x1 को 0 लिया तो यहाँ पे हूँ, x2 को 0 लिया तो यहाँ पे हूँ. This is one IC giving me a utility of 0. So anytime I draw another IC and I make it touch the axis, then you're violating the rule that ICs can cross each other. Which is why when you draw the IC, you make sure that it never touches the axis, because ICs cannot cross each other. Right? Let's take another point other than 0, 2, 3. Then 2, 3 gives me a utility of 2 square into 3, which is 2 into 2, 4 into 3, 12. Now I want to figure out other points which give me a utility of 12. 1, 12, 2, 3, and so on and so forth. You can figure out other points which also give me a utility of 3, right? Under root 12, 1, and so on and so forth. So 1, 12 will be 1 and 12, which is right here. 2, 3 will be somewhere here, and then you can plot these ICs with a utility of 12, and so on and so forth. Alright, so this is how my Cobb Douglas looks like. अब आप आ जाओ convex ICs पे. So let's try one more question. Let's try a question like u is equal to 1 upon root x1 plus 1 upon root x2. Let's figure. हमने अभी तक जो फॉर्म्स करी हैं वो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड कॉब डगलस. हम क्वाज़ी लीनियर भी करेंगे बाद में, बट सबसे पहले अगर आपको कोई फंक्शन दिखता है जिसका आपको आईसी बनाना है, तो आप देखोगे आपके पास जो जनरल फॉर्म्स है वो उसमें से किसी से सिमिलर है क्या? इज इट सिमिलर टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट? नो. Is it similar to perfect complement? No. Is it similar to Cobb Douglas? No. Then you need to then plot it otherwise. So step 1. What is the step 1 you take to plot any IC? You check whether they are both goods or bads, or one is a good, one is a bad. उसके लिए आप figure out करते हो mu1. mu1 आप calculate करोगे, that is del u by del x1, which is nothing but minus 1 by 2 x1 raised to power minus 1 by 2 minus 1, which is minus 1 by 2 x1 raised to power minus 3 by 2. Which means that जब आप x1 को increase करोगे तो मेरा mu जो है वो negative है. इसका मतलब मेरी marginal utility is negative. You know, when I increase x1, my marginal utility is negative, which means this is not a good, but this is a bad. This is not a good, but this is a bad. Similarly, आप mu2 जब करोगे तो आपको realize होगा कि वो भी bad है. When you calculate mu2, then also you figure out that that is also bad. Now you go back to your
satiation point example, and you know that when there are two bads and this is the quadrant, which means that you now know कि ये वाला जो हमारे ICs बनेंगे ये भी negative बनेंगे. There will be a trade-off. You will have negative sloping ICs. Now, when you have a negative sloping IC, then the next question is कि वो IC concave है, straight line है या convex है. उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम निकालेंगे MRS. MRS is nothing but mu1 upon mu2, which is minus 1 by 2 x1 minus 3 by 2 upon minus 1 by 2 x2 minus 3 by 2. This and this gets cancelled. So can I write then x2 upon x1 the whole raised to power 3 by 2, which means that if I want to figure out कि ये MRS मेरा positive है या negative है, I will say that I'm moving from point A to point B. I'm moving from point A to point B. जब मैं A से B पे move कर रही हूँ तो मैं x1 को बढ़ा रही हूँ और x2 को कम कर रही हूँ. I'm increasing x1 and I'm reducing x2. When I'm increasing x1 and reducing x2, which means that मेरा जो overall है, sorry, ulta. I'm increasing x1 and I'm reducing x2, which means the overall MRS is falling, which means I have a diminishing MRS. If I have a diminishing MRS, तो automatically मेरे पास जो ICs आएंगे वो क्या होंगे? वो होंगे convex. मेरे पास जो ICs आएंगे वो क्या होंगे? वो होंगे convex. But these convex ICs are not Cobb Douglas. In fact, they're actually ICs of bads, and that's why we are moving inwards. So this is the correct IC. So if I look at it, मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में दो चीजें करी हैं. एक तो मैंने आपको बोला है कि Cobb Douglas जो होते हैं उनका जनरल फॉर्म क्या होता है. दूसरा हमने बोला है कि अगर कोई IC कॉन्वेक्स है तो वो Cobb Douglas हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर Cobb Douglas है तो वो IC कॉन्वेक्स होगा ही होगा. इनफैक्ट तीन चीजें करनी है. The third thing actually I've taught you, which is very important, is how to plot a random function. When I say random function, I mean that any function that you haven't seen before. How do you plot that? You plot it by figuring out firstly whether there's a trade-off or not. उसके लिए you figure out कि whether we have goods or bads or whatever combination. Second is then you figure out कि वो diminishing MRS है कि नहीं है या कौन सा MRS है. Then on the basis of MRS you plot the IC. Then on the basis of the MRS, we plot the IC. So that is all we have in this video of Cobb Douglas and convex functions. अब हम next video में quasi-linear करेंगे. Quasi-linear is also very, very important function. Actually, now before we end the video, let's do one more example of a random function. Let's say u is equal to root x plus x1 plus root x2. So I'll go again step by step with you. What is step 1? Think, what is step 1? To figure out whether it's a good or a bad or what combination it is. उसके लिए हम क्या करते हैं? mu1 निकालते हैं और mu2 निकालते हैं. mu1 is 1 by 2 x1 minus 1 by 2. mu2 1 by 2 x2 minus 1 by 2. So this is nothing but 1 by 2 root x1. Greater than 0 implies x1 is a good. Again, greater than 0 implies x2 is a good. दोनों goods हैं, so I have a combination of good and good. If I have a combination of good and good, then satiation point के हिसाब से मैं कहाँ पे हूँ? मैं इस quadrant में हूँ. ठीक है, अब मुझे फिगर आउट करना है कि मेरे पास नेगेटिव स्लोप तो है, वो नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन है, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है. उसके लिए मैं क्या करूँगी? I will go to step 2. I will find out MRS. MRS is nothing but mu1 upon mu2, which is 1 by 2 under root x1 upon 1 by 2 under root x2. This and this gets cancelled. This is under root x2 by under root x1. जब भी हम point A से B पे जाते हैं तो हम x1 increase करते हैं, x2 fall कराते हैं. So x1 is rising, x2 is falling, which implies that my overall thing is falling. So I have a diminishing MRS. If I know that I have a diminishing MRS, that means my ICs are convex. तो इसका IC कैसे बनेगा? इसका IC will be convex ICs. You know, I have a trick question for you.
And if you want to play fair in the trick question, you have to pause the video and find out the answer. I'm telling you, otherwise कोई फायदा नहीं है. I can't check you. So just it's a trick question. Just try and participate. U is equal to root x plus x1 plus root x2 है ना. This is my diagram. हमने सारे steps कर लिए. Tell me, think about it and tell me. Will the ICs of this function, not overall, this function, touch the axes? Will the ICs of this function touch the axis? ये जो ICs है मैं उसको axis को touch करा सकती हूँ कि नहीं करा सकती हूँ? क्योंकि आपको याद है मैंने Cobb Douglas में बोला था ना कि ये मेरा first IC है. I'm asking you for this particular question, does the same thing hold true? Or can this function, in this function, IC touch the axis? Now, like I said, it's a trick question. You have to pause the video and think about it and then play and imagine the satisfaction you'll get if you're right. So just try. Okay, so for the people who did and for the people who didn't, let's see the answer. Okay. So I'm giving a pause so that you know that if you hadn't paused the video earlier, you need to pause it now. So the way to answer it is, you take a bundle. Let's take a bundle of 0, 4. The u is equal to under root 0 is 0, under root 4 is 2. So this gives me a satisfaction of 2, which means if I have a point here, that point is not giving me a utility of 0. That point is giving me a satisfaction of 2. You take another bundle, 0, 9. It will give you a utility of 3, which means जैसे जैसे मैं इस point पे ऊपर बढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरा satisfaction भी increase हो रहा है. Which means the axis के ऊपर जो सारे points हैं वो एक utility bundle represent नहीं कर रहे हैं. Different points on the axis are representing different utilities, which is why different points on the ICs actually are part of different ICs. Different points on the axis are part of different ICs क्योंकि points जो है axis के ऊपर वो different utilities represent कर रहे हैं, right? So isn't it very satisfying जब आपको पता लगता है कि कोई चीज कैसे हुई थी. So जब हम लोगों ने Cobb Douglas करा था तो 0, 4 और 0, 9 जो है वो एक ही IC पे क्यों थी? क्योंकि दोनों ने मिलके यूटिलिटी हमें 0 दी थी. क्योंकि उसके अंदर मेरा जो फंक्शन होता है जनरल फॉर्म होता है दैट इज x1c x2d. एनी टाइम यू मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय 0 इट बिकम्स a 0, which is why the axis itself was first IC. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? Points on the axis are representing different utility bundles, which means these points cannot be clubbed together to say कि इसके अंदर 1 IC बनेगा. वो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हर point पे एक different utility है. इसीलिए हमारे ICs जो है वो axis touch करेंगे ताकि हमें पता हो कि ये वाला जो utility है वो इस IC पे है, ये वाला जो utility है वो इस IC पे है, and so on and so forth. Right? So this truly and genuinely finishes our convex and Cobb Douglases, and I will see you in the next video, which is quasi-linear. Thank you.